Dear students, I am Dr. Kumar Saini, Associate Professor in Mathematics in BLJS College Tosham, District Bhiwani, Haryana. Today I will deliver lecture on mapping by elementary functions. Mappings or transformations. For z equal to x plus iota y, the equations u equal to uxy, v equal to vxy, which are continuous functions of x and y and possess continued partial derivatives defined mappings or transformation by means of which a relation between UV plane and XY plane can be established. It is denoted by W equal to Fz. It is denoted by W equal to Fz equal to U plus iota V. This mapping is said to be 1-1 if corresponding to each point of XY plane there is a unique point of UV plane, and conversely the corresponding points in the two planes are called images of each other. दोबारा करो, फिगर से देखो क्या कहना चाहता है. जेड प्लेन है, एफ इज ए फंक्शन डब्ल्यू प्लेन. ये जेड का इमेज ओमेगा है, डब्ल्यू है, डब्ल्यू प्लेन. ये डी डैश है, डोमेन इसका डी है. जेड प्लेन और डब्ल्यू प्लेन है. तो मैपिंग और ट्रांसफॉर्मेशंस. मैपिंग बाय एलिमेंट्री फंक्शंस. तो फॉर जेड मैपिंग और ट्रांसफॉर्मेशंस. फॉर जेड को हम एक्स प्लस आइटा वाई होता है ये. दी इक्वेशंस u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, v इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, which are continuous functions of x and y and possess continuous partial derivatives. possess क्या कर रहा है? continuous partial derivatives defined define a mapping or transformation by means of which a relation between UV plane and XY plane can be established. It is denoted by W equal to Fz equal to U plus iota V. This mapping is said to be 1-1 if corresponding to each point of XY plane there is a unique point of UV plane, and conversely the corresponding points in the two planes are called images of each other. This mapping is said to be 1-1 if corresponding to each point of XY plane there is a unique point of UV plane, and conversely the corresponding points in the two planes are called images of each other. इसका इमेज ये है और इसका इमेज ये है ना. जेड प्लेन में जेड का इमेज जेड डैश है, ओमेगा है, और ओमेगा का जेड है. Some elementary mappings. We shall now consider some elementary mappings such as
ट्रांसलेशन नंबर 1, रोटेशन नंबर 2, मैग्निफिकेशन नंबर 3, इन्वर्जन नंबर 4. etc. In such cases, it is convenient to consider the mapping as a transformation in just one plane. In such cases, it is convenient to consider the mapping as a transformation. मैपिंग को हम ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में रहेंगे जस्ट वन प्लेन. पहली चीज़ है ट्रांसलेशन. W इक्वल टू जेड प्लस अल्फ़ा. द मैपिंग W इक्वल टू जेड प्लस अल्फ़ा. फिर अल्फ़ा इज़ एनी कम्प्लेक्स कांस्टेंट. अल्फ़ा क्या कोई कम्प्लेक्स कांस्टेंट है. इज़ ए ट्रांसलेशन बाय मीन्स ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंटिंग अल्फ़ा. द मैपिंग W इक्वल टू जेड प्लस अल्फ़ा where alpha is any complex constant is a translation by means of vector representing alpha. By this transformation, the figure in W plane is the same as figure in Z plane with a different origin. ओरिजन डिफरेंट हो जाएगा बस. कहता है बाई दिस ट्रांसफॉर्मेशन. इस ट्रांसफॉर्मेशन का क्या होगा. इस ट्रांसफॉर्मेशन से द फिगर इन W प्लेन इज द सेम एज फिगर इन Z प्लेन विद ए डिफरेंट ओरिजन. ओरिजन डिफरेंट हो गया. लेट P एंड A बी द पॉइंट्स Z एंड अल्फा रिस्पेक्टिवली. Let P and A be the points Z and alpha respectively, where A is a fixed point and P is a variable point. P variable point है, A fixed point है. Then geometrically speaking, the image of the point P under transformation is the fourth vertex cube of the parallelogram with OP and OA as adjacent sides. OP and OA को हम क्या लेंगे. adjacent sides लेंगे. और Q क्या होगा. vertex, fourth vertex Q of the parallelogram होगा. Hence the vector alpha is represented by PQ. जो वेक्टर अल्फ़ा है उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे. पी क्यू के फॉर्म में. तो एनालिटिकली ये तो ज्योमेट्रिकली था. अब हम एनालिटिकली मैथमेटिकली क्या कहते हैं. जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई होता है. अल्फ़ा को हम ए प्लस आइटा बी लिख सकते हैं. डब्ल्यू यू प्लस आइटा बी होता है. देन एफ जेड इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू यू प्लस आइटा बी. हेयर Z प्लस अल्फ़ा है इज इक्वल टू Z क्या होता है. एक्स प्लस आइटा बाई अल्फ़ा क्या होता है. ए प्लस आइटा बी. तो रियल पार्ट अलग कर लो. एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस आइटा बाई प्लस बी. अल्फ़ा नहीं है, ए है आई थिंक. जो भी है अल्फ़ा ही है. फिगर देखो दिस. ये क्यू क्या होगा. ये फोर्थ वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम. ठीक है. ये पी जेड है. ए अल्फ़ा है. ये अल्फ़ा हो गया. क्यू डब्ल्यू. तो u इक्वल टू एक्स प्लस ए, v इक्वल टू वाई प्लस बी. दस द इमेज ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई. ये पी एक्स वाई है. दस द इमेज ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई इन द जेड प्लेन इज द पॉइंट क्यू
x plus alpha y plus b, x plus in the w plane. Thus the image of the point pxy in a z plane is the point q. q point क्या है, x plus alpha y plus b in w plane, and x plus alpha comma y plus b is the fourth vertex of the parallelogram with adjacent sides OP and OA, where O is the origin, P the point xy and A the point AB. Thus by the above mapping, the point P is translated along the vector alpha through a distance absolute value of alpha. कहता है इस तरह की मैपिंग से क्या हो गया, जो पॉइंट P है ट्रांसलेट हो गया along the vector alpha through a distance magnitude of alpha. Since this is true for every point in any region of the z plane, the image of the region is simply a translation of that region. The image of the region is simply a translation of that region. The two regions have the same shape, size and orientation. इन दो रीजन हैं जो Z और W रीजन हैव द सेम शेप भी सेम होगी, साइज भी एंड ओरिएंटेशन भी. अब एग्जांपल करते हैं इसका, इससे और क्लियर होगा. What is the domain or region? What is the What is the domain or region of the W plane into which rectangular region in the Z plane तो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस. एग्जाम्पल 1 है, what is the domain or region of what is the domain or region of W plane into which rectangular region in the Z plane bounded by x equal to 0, y equal to 0, x equal to 2, y equal to 1 is mapped under the transformation W equal to Z plus 1 minus 2 iota. तो सोल्यूशन इसका क्या होगा, we have W equal to Z plus 1 minus 2 iota. तो इम्प्लाइज क्या हो गया,
डब्ल्यू क्या होता है, यू प्लस आइटा वी इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई। जेड क्या है, एक्स प्लस आइटा वाई है। डब्ल्यू क्या है, यू प्लस आइटा वी है। एक्स प्लस आइटा वाई प्लस 1 - 2 आइटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 प्लस आइटा वाई -2। तो यहाँ से क्या हो गया, u बराबर है एक्स प्लस 1, बी बराबर वाई -2। नाउ व्हेन ये x इक्वल टू 0 है, u है क्या है, ये अल्फ़ा 1 है। देयरफॉर x इक्वल टू 2 when z इक्वल टू x इक्वल टू 0 अल्फ़ा इक्वल टू 1 है। तो x इक्वल टू 2 है तो अल्फ़ा इक्वल टू 3 हो गया। y इक्वल टू 0 है तो अल्फ़ा इक्वल टू -2, y इक्वल टू 1 है तो v, u इक्वल टू 3, u इक्वल टू 1। अल्फ़ा नहीं है, u है, ये u v, क्योंकि u और x में क्या रिलेशन है, u इक्वल टू एक्स प्लस 1 और v इक्वल टू वाई -2। तो b है w इक्वल टू जेड प्लस 1 - 2 आइटा। जेड को इसने एक्स प्लस आइटा भी ले लिया प्लस 1 - 2 आइटा। अब रियल पार्ट को अलग किया इसने, एक्स प्लस 1 प्लस आइटा, इमेजिनरी को वाई -2 ये अलग कर दिया। देयरफॉर u आपका z प्लस 1 हो गया रियल पार्ट, v आपका y -2 हो गया। नाउ व्हेन x 0 है तो u क्या हो गया, 1 हो गया। जब y 0 है तो v क्या हो गया, तो -2 हो गया। ठीक, व्हेन x क्या है, 2 है, u 3 हो गया। y इक्वल टू 1 है, b -1 हो गया। thus the lines x equal to 0, thus the line y equal to 0, x equal to 0, x equal to 2 are mapped, x equal to 0, x equal to 2 are mapped respectively on the lines u equal to 1, क्या है ये, क्या, एक मिनट यार, डेट। thus the lines x equal to 0, x equal to 2, ये लाइन्स है, आर मैप्ड रिस्पेक्टली ऑन द लाइन्स, ये क्या हो गया, u इक्वल टू 1 एंड u इक्वल टू 3। ठीक, also the lines y equal to 0 and y equal to 1 are mapped on v equal to -2, y equal to 0 क्या है, v equal to -2 पे मैप हो रहा है, y equal to 1 v equal to -1 पे हो रहा है रिस्पेक्टिवली। ठीक, द रिक्वायर्ड इमेज क्या होगी इसकी, इज ए रेक्टेंगल इन w प्लेन बाउंडेड बाय द लाइन्स u इक्वल टू 1, u इक्वल टू 3 इन से बाउंडेड हो रही है, एंड v इक्वल टू -2, v इक्वल टू -1। ठीक है, also it is easy to see that each
interior point of the first rectangle is mapped into one and only one point of the second rectangle, and conversely as shown in the following figure। ये फिगर आपकी पहली है जेड प्लेन, x इक्वल टू 0 क्या है आपका y एक्सिस है, x इक्वल टू 2 पे ये x इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू 0 पे x एक्सिस है, y इक्वल टू 1 पे ये क्या है पैरेलल टू x एक्सिस एट ए डिस्टेंस y इक्वल टू 1। और यहाँ क्या है w प्लेन में इसका मैप आपका u है और v है, तो u इक्वल टू 1 से u इक्वल टू 3 है, एंड v इक्वल टू -2 से v इक्वल टू -1 है। ठीक। तो अगला क्या है एग्जाम्पल सेकंड, पहला हो गया मैपिंग, मैप या ट्रांसलेशन। सेकंड है रोटेशन। तो W इक्वल टू Z e की पावर आइटा थीटा, थीटा आइटा थीटा 1, थीटा 1 इज रियल। बाय दिस ट्रांसफॉर्मेशन, इस ट्रांसफॉर्मेशन से द इमेज है ना जो Q ऑफ ए पॉइंट P पॉइंट का इमेज Q है इन द जेड प्लेन। ठीक। इज ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग लाइन OP लाइन को थ्रू एन एंगल थीटा से रोटेट कर दो। OP लाइन को थीटा 1 से रोटेट कर दिया, थीटा 1 से। दिस रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज में है। इफ थीटा 1 इज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज इफ थीटा 1 इज नेगेटिव। अगर थीटा 1 नेगेटिव है तो ये क्लॉकवाइज होगा। अगर ये थीटा 1 एंटी, दिस रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज if theta 1 is positive and clockwise if theta 1 is negative. Analytically we write z equal to r e की पावर आइटा थीटा। ये z प्लेन है, w प्लेन में है, ये है z प्लेन में। z इक्वल टू r e की पावर आइटा थीटा एंड w इक्वल टू उसके करस्पॉन्डिंग क्या हो गया r e की पावर, इतनी गंदी वो है इसकी प्रिंटिंग बुक की कोई खास नहीं है। r e की पावर आइटा थीटा 1 e की पावर आइटा थीटा, तो ये r e की पावर आइटा थीटा प्लस थीटा 1। Thus the modulus of w is the same as that of z, but the argument of w is increased or decreased by an amount theta 1 according as theta 1 is positive and theta 1 is negative। ठीक है। Since this is true for every point, every region in the z plane is rotated through an angle theta 1, geometrically the two regions are exactly the same। Since this is true for every point, every region in the z plane is rotated through an angle theta 1, so for every point, every region in z plane is rotated through an angle theta 1, geometrically
द टू रीजन्स आर एग्जैक्टली द सेम। ज्योमेट्रिकली क्या हुआ, दो रीजन एग्जैक्टली सेम आएंगी रोटेशन से। एग्जाम्पल इसका, determine the region in the W plane corresponding to the triangular region bounded by the lines x equal to 0, y equal to 0, x equal to 0 का मतलब y axis, y equal to 0 का मतलब x axis and x plus y equal to 1 in z plane mapped under the transformation w equal to z e की पावर आइटा जेड बाई 4। क्या है ये, वी हैव जेड क्या होता है एक्स प्लस आइटा वाई, डब्ल्यू क्या है जेड ई की पावर आइटा पाई बाई 4। तो डब्ल्यू क्या होगा, जेड की जगह एक्स प्लस आइटा वाई लिख दिया, ई की पावर आइटा पाई बाई 4। तो एक्स प्लस आइटा वाई एक टेन रूट 2 प्लस आइटा एक टेन रूट 2 इक्वल, रियल पार्ट को अलग करो, इमेजिनरी को अलग, एक्स माइनस वाई टेन रूट 2 प्लस आइटा एक्स प्लस वाई अंडर रूट 2। तो इससे u क्या हो गया, एक्स माइनस वाई टेन रूट 2, ये क्या हो गया एक्स प्लस वाई टेन रूट 2। देन द लाइन z इक्वल टू 0 मैप्स u इक्वल टू माइनस एक टेन रूट 2 एक्स, v इक्वल टू एक टेन रूट 2 वाई प्लस v इक्वल टू माइनस u। द लाइन y इक्वल टू 0 मैप्स इंटू u इक्वल एक टेन रूट 2 एक्स, v इक्वल टू एक टेन रूट 2 एक्स माइनस है ये। Also the line x plus y equal to 1 maps into b equal to equate under root 2 as the given triangular region in z plane। in z plane में है y equal to 0, x equal to 0, x plus y equal to 1। this is straight line making angle 135 is transformed into triangular region W in the W plane bounded by the lines b equal to u, b equal to minus alpha, b equal to u का मतलब 45 डिग्री एंगल बनाते हुए, b equal to माइनस u का मतलब 135 एंगल बनाते हुए एंड v इक्वल टू 1/√2 का मतलब ये एट हाइट है 1/√2 शॉन इन द फॉलोइंग फिगर। ठीक, नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन। तो w इक्वल टू अल्फा जेड, अल्फा इज पॉजिटिव एंड रियल, स्ट्रेचिंग, इसको स्ट्रेचिंग भी कहते हैं, मैग्निफिकेशन ये स्ट्रेचिंग, बढ़ना, मैग्नीफाई होना। तो इट मीन्स बाय मीन्स ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन द फिगर इन द जेड प्लेन आर स्ट्रेच्ड और कंट्रैक्टेड, स्ट्रेच होगा या कंट्रैक्ट होगा इन द डायरेक्शन z according as alpha is greater than 1 और alpha lies between 0 और 1 में तो स्ट्रेच होगा, एक से छोटा तो स्ट्रेचिंग होगी, अगर एक से बड़ा है तो ये एक्सटेंशन होगी है। ठीक है, ये P है, Q है,
ये पी से क्यू पे आ गया, ये स्ट्रेच हो गया अगर अल्फ़ा आपका 0 से 1 के बीच में है, पी से क्यू आ गया अगर अल्फ़ा ग्रेटर देन 1 है। दी अबव to obtain the image q of a point p in the z plane, we take a point q in OP if alpha lies between 0 and 1, and or a point q in QP produced if alpha greater than 1 such that OQ equal to alpha into OP. This transformation is also called a homothetic transformation. Homothetic transformation. Homothetic transformation. Magnification. Dear students, we will do in other portion in next lecture, and you can view this lecture which we have done on college website name www.bljscollege.com, on YouTube channel, on college YouTube channel. Thanks. We will meet in the next lecture. Thank you.